देखो राजा, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान ना देखो कि गिवन है मिस्टर अवतार सिंह परचेज्ड अ प्लॉट इन 2002-3 for rupees 3,80,000. It was sold on 15th January 2025. 15th January 25 मतलब no indexing. This is after 23rd July 24. For 15 lakh 80,000 and he paid 20,000 as brokerage charges. He invested rupees 2 lakh in bonds of NHAI, National Highway Authority of India, on 31st March 2024-25, and 3,10,000 in bonds issued by RECs, Rural Electrification Corporation Limited, 1st June 2025. Compute the taxable amount of capital gain if CII is given. ਤੁਹਾਡਾ CII कितना 360. Yes or no? Point is कि ਤੁਹਾਨੂੰ पहली चीज इंडेक्सिंग मिलनी है. नो. टेल मी, अगर फॉर्मेट वाइज चलोगे सब तो पहली चीज क्या है? सेल कंसिडरेशन. हाउ मच? 15,80,000 minus selling expenses 20,000. Your NSC becomes 15,60,000. माइनस की करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एंड कॉस्ट वाज 3,80,000. कॉस्ट वाज 3,80,000. So your long-term capital comes out to 11,80,000. इतना क्लियर क्वेश्चन. आज चेक करो इन्वेस्ट कितने कितना. bonds of NHAI and REC. Both the bonds investment give you an exemption under section 54 EC. सुनो चीज ਉਹਦੇ रूल्स की है. सेक्शन बोलो 54 EC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਦ ਮਿਲਦਾ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ਤੇ ਮਿਲਦਾ. छोटी जी चीज़ा पढ़ लीजिए पहला. You have to invest within 6 months of date of sale. You have to invest within 6 months from the date of sale. And maximum investment, your maximum exemption limit is 50 lakhs. Am I clear? Yes or no? Maximum investment limit is below 50 lakhs. And those investments will be having a lock-in period for 5 years. Section 54 से कितना lock-in सी? कि घर बेच के घर खरीद दिया, lock-in 3 years. 3 साल तक दोबारा उन्हें सेल नहीं कर सकते. मींस 54 F च भी होई होगा तो उत्थे भी खरीदता कर रहे सी ना. ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 5 years ਦਾ lock-in period. ठीक है. पहली चीज, with this much information, let's do. One more thing. 54 EC ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कादे थे? इट्स ऑन लैंड और बिल्डिंग और बोट. ओके. सेल की कितना मींस लैंड बिल्डिंग और बोट एंड इन्वेस्टेड इन द बॉन्ड्स ऑफ. बॉन्ड्स ਦੇ एग्जांपल ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੜੇ ਅਸੀਂ? फिलहाल you read 2 bonds, NHAI and REC. NHAI National Highway Authority of India and REC Rural Electrification Corporation of India Limited. ठीक है. चेक करो इस क्वेश्चन के अंदर सेल की कितना प्लॉट तो लैंड है. प्लॉट मींस लैंड. उत्थे अर्न की कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है. इन्वेस्ट कितने कितना बॉन्ड्स के अंदर. दोनों बॉन्ड्स एलिजिबल है सेक्शन 54 दे EC. बट टाइम लिमिट किसी विद इन 6 months ऑफ डेट ऑफ सेल. वो चीज चेक करो
You sold on 15th January. Within 6 months means up to 14th July इन्वेस्ट होना चाहिए. पहली इन्वेस्टमेंट कब की थी? 31st March. सेकेंड इन्वेस्टमेंट 1st June. 14th July तो पहला पहला ही हुई. Within 6 months. तो both are eligible. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? You will say minus exempt under section 54 EC, NHAI and REC bonds. Both were within time limit, yes or no? NHAI bonds were for rupees 2 lakh and REC was 3 lakh 10,000. So your taxable LTCG comes out to how much? 6 lakh 70,000. Yes. Any doubt? Yes or no? Clear? Question number 9 the C part देखो राजा. From the following information relating to the previous year, what's your previous year? 24, 25. Compute taxable capital gains of Mrs. Krishma for the assessment year 25, 26. Purchased agricultural land Agra city in 2002-3 which is self-cultivated for rupees 1,50,000. Sold the land on 10th August 2024 for rupees 7 lakh. Okay. Sale date is 10th August 24 means after 23rd July means without indexation benefit. Yes or no? ठीक है. Next देखो. Invested in purchase of a house. You purchased a house on 10th September 2024 for rupees 2 lakh and purchased another piece of agricultural land on 10th October 2024 for rupees 1,20,000. CII ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈ और ਸਾਡਾ अपना CII is 363. He does not own any other house. ये point काहदे ਲਈ ਦਿੱਤਾ? Like you read in 54 है ना? Number of houses. That's why. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. Tell me sale ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ sold the land. Land ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ first point given means that's the point of agricultural land. Agricultural land. Sale consideration is 7 lakh. Selling expenses nil. NSC net sale consideration becomes 7 lakh. But क्या होगा? Cost of acquisition or index cost of acquisition? बोलो. Sold on 10th August 24. Cost of acquisition. Cost of acquisition was बोलो 1,50,000. Yes or no? Check what's your LTCG, long term capital gain. Okay. देखो राजा ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ? ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ. तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ you can take some other date. ਇੱਥੇ you can think like 10th April 24. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 10th August ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ because it's after 23rd July. बट ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫॉर दैट ओनली कि आंसर मैच हो जाएगा. बस अगर एग्जाम एज इट इज आर डेट आई तो यू विल यूज हेयर 1,50,000. ठीक है. फिलहाल की करिए बोलो 1,50,000 इंटू 363 डिवाइडेड बाय 105.
So it's 5,18,571 and the balance is 1,81,429. उसके बाद नेक्स्ट चीज देखो क्वेश्चन एक बार एलटीसीजी ਤਾਂ आ गया ਕਹਿੰਦੇ they invested in purchase of ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜੋ 3 and 4 invested in purchase of a house on 10th September 24 house खरीदा and second purchased another piece of land agricultural land on 10th October जब तुसी एग्रीकल्चरल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड आगरा सिटी लिखिया अर्बन हो गया देन सेल्फ कल्टिवेटेड वाली कंडीशन भी दसती अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड सेल करके कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड परचेज किया एग्जेम्पशन कहनी मिलती 54 बी एग्जैक्टली मिलती कोई प्रोपोर्शन नहीं मींस 1,20,000 की एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 बी पहला तुसी ओ वाली एग्जेम्पशन दे दो 120 एंड द बैलेंस इज 61,429 उस तो बाद पर्सन ने एक और चीज खरीदी केड़ी he also purchased a house on 10th September 24 54 ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੂਗੀ 54F any long term asset sale करके ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ you will get 54F yes or no ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ मतलब 61,429 तो बाद you will say exempt under section 54F और उत्थे केड़ी केड़ी डिटेल लिखते सब तो पहला एनएससी किन्नी 7 लाख दूसरी चीज अमाउंट इन्वेस्टेड कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया तुसी 2 लाख का घर खरीदिया वो चीज आ गई then you use the proportion what's the proportion LTCG into amount invested upon NSC LTCG is कितना 1,81,429 into 2 lakh upon 7 lakh. So it's 51,837. So the taxable LTCG कितना आ गया 9592. Yes or no? This is as per indexed cost of acquisition. अगर इतने cost of acquisition according कर दे that was 1,50,000. Yes or no? Balance क्या आना सी 5,50,000. 54B कितनी मिलनी सी exactly same 120. The balance would be 4,30,000. Then ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ LTCG ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸੀ LTCG ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡਾ 5,50,000 into 2 lakh upon 7 lakh क्वेश्चन कराना हले 1,57,143 फिर कितना गेन आना टैक्सेबल रहेगा that's 2,72,857. This would be if we use the exact statement as per the question for the date 10th August 2024. But book ने डेट सिर्फ ईयर चेंज करता सेल डेट और बाकी सब कुछ एज इट इज करता यस और नो एनी डाउट हाँ वाला आंसर भी नोट च लिख लियो as per given question answer will be this but as per the answer we have taken some other date it is assumed किया date of sale assumed before 23rd July 24 ठीक है yes or no और ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ
लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिवीजन दे कितने पॉइंट्स पड़े थे 3 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स है ना 12 मंथ्स 24 मंथ्स एंड 36 मंथ्स वो रूल भी कितने तक एप्लीकेबल है इस डेट तक दैट रूल इज आल्सो लिसन वेरी केयरफुली जेड़ा रूल आ वाला रीड कीता सी समझो we discuss the rule of long term and short term we discuss this yes or no long term and short term 12 months 24 months and 36 months this rule as it is applicable on till 23rd July 24 after that now only two slabs are there 1 year and 2 years that we'll discuss in the next one okay आ वाला रूल भी कितने तक कंटिन्यू होगा सिर्फ 23rd जुलाई 23rd or 22nd you can say 23rd तो ਤੁਹਾਡਾ new rule ਚੱਲੂਗਾ only 1 year and 2 years that is 12 months and 24 okay